Hello everyone, welcome to WSOP. So my name is Sivsankar Hazra, and today we will discuss the PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana, or in short we will call it PMSGMBY. PMSGMBY. Prime Minister Surya Ghar Mukti Bijli Yojana, or that is what I would say rooftop solar project. So, in short, you have to remember SGMBY. SGMBY. So, PMSGMBY. That means Prime Minister Surya Ghar Mufti Bijli Yojana. It was started on 13th of February, 13th February 2024. So Prime Minister Surya Ghar Mufti Bijli Yojana. It's a rooftop solar project. Like here you can see the rooftop solar project. So this initiative has taken by the central government, and this one is completely a central sector scheme. This one is not a state or the central sponsored. This one is a central sector scheme. That one for the what at least 1 crore household will be avail this yojana, or the having target that at least 1 crore houses would be electrified through the rooftop solar project. So we will now go through the project, because this scheme is having the potential to be asked in your prelims, as well as this also will work as a folder point, or somewhere else you can write in the mains answer writing as well. So first of all, you can let's have a looks. The Prime Minister of India has given this, I would say, what nation another scheme, that is what I would say sustainable scheme. I would say one of the scheme for the resource management as well, or the conservation of resource. You may say the conservation of resource. Whenever there would be a questions for the conservation of resource, for the sustainable development, how the India is planning to achieve the net zero target by 2070. All these questions, whenever you are asking or you are being asked there, you can add on this point as a folder point or as a point. It's a central sector schemes or yojana to provide free electricity at least 1 crore household in India who will opt to install the rooftop solar electricity unit. मतलब इसका काम ये है कि जिन लोगों ने इस स्कीम को अवेल करेंगे, उनको जो 1 करोड़ जो हाउस होल्ड का टारगेट रखा गया है ना, तो उनको मुफ्ती में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. कैसे? द हाउस होल्ड विल बी एबल टू एटलीस्ट गेट 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ. अगर किसी ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर खुद को शामिल कर रहा है, जो जैसे कि, तो उनको 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईयर सी विल गेट फ्री every month. It's an ambitious scheme approved by the Union Cabinet on the 20th February. Well, so it's a, but that was announced on the 13th of February, but now it was finally the cabinet approved it on the 29th of February with 75,021 crores outlay. So the outlay was, so on an average you can remember just 75,000 crores. सो ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स जो होने जा रहा है, जो मई मंथ पे है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनने का एक चांसेस है कि दे मे आस्क ए क्वेश्चंस फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. सो 300 दैट मीन्स जो टुडे इज एक्जैक्टली सिंस व्हाट I have been watching since 2019 and 2020, the UPSC have started asking the questions in pinpointed basis. Like this much, how much unit would be given free, there will be the option, let's say 250 unit, like this. So they are also asking and the playing with the numbers and the sentence as well. So here you have to, so this one is the key one, that central sector. So solar free electricity, that would be up to the 300 units. How much total money is been spent, or that is outlay?
75,021 crores। तो ये टारगेट क्या है? 1 crore हाउस होल्ड टारगेट, इट इज हैविंग टारगेट 1 crore हाउस होल्ड. Now we will go into the detail. So in the detail, how does the Surya Ghar Mufti Bijli Yojana one can avail? How can one avail that one? Okay, just here you have to go through this one. Now, what exactly this? Now, how can one will avail all these things? We will go through. The scheme will be provide subsidies of 60% of the solar unit cost. सोचो कि अगर आपका जो जैसे कि 2 किलोवाट का कैपेसिटी हो गया, अगर मतलब अगर आपका सेटअप जो सिस्टम का सेटअप 2 किलोवाट तक हो रहा है, तो उसका जो 60% आपका जहाँ जो भी मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होगा, उसमें से 60% आपको क्या मिल जाएगा? सब्सिडीज मिल जाएगा. एंड कैपेसिटी एंड 40% इन केस ऑफ 3 किलोवाट, 2 to 3 किलोवाट अगर वहाँ पे होगा तो आपको एडिशनल 40% आपको कॉस्ट फॉर द सिस्टम बिटवीन 2 to 3 किलोवाट का आपको और मिल जाएगा. सो सब्सिडीज देयर, यहाँ पे क्या है? सब्सिडीज है. एंड दैट सब्सिडीज हैज बीन कैप्ड एट 3 किलोवाट कैपेसिटी. मतलब अगर आप 5, 6, 7, 8 करें तो वहाँ पे आपका सब्सिडी जो वो लागू नहीं होगा. एट करेंट बेंचमार्क प्राइस जो है ना, ये 30,000 सब्सिडीज है. दिस मीन्स दैट विल हैव द 30,000 सब्सिडीज फॉर द 1 किलोवाट सिस्टम, 60,000 for the 2 kilowatt and 78,000 for the 3 kilowatt system or the higher. तो अगर कोई जो इंस्टॉलेशन कर रहा है सोलर अपने घर के ऊपर जो रूफटॉप के ऊपर, अगर आप 1 किलोवाट का कर रहे हैं तो आपको 30,000 का सब्सिडीज मिल जाएगा. वहीं पे अगर 2 किलोवाट का करें तो आपको 60,000, 3 के लिए 78,000 का आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे अगर एसेंस हम देखें ना, what exactly the essence lies here, that you are getting subsidies while you are installing the rooftop solar project on your houses or somewhere else in your backyard, sorry. Okay, so subsidies you are getting. Okay, up now who would be eligible? Then the point comes to pay. Who exactly would be eligible candidate? Now the anyone can apply this one. First of all, he or she must be the Indian citizen. वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. Must have own a house. Must own a house with roof that is suitable for the installing the solar panel. आपका एक रूफ होना चाहिए. द हाउसेज मस्ट हैव वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. जो आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी एक मीटर होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए. वहाँ पे कोई चोरी छुपे कारोबार नहीं होना चाहिए. So that must have the electricity, that would be valid electricity connection, must have roof, and the house must not have a valid of any other subsidies availed, sorry, माफ कर दें. द हाउस मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडीज फॉर द सोलर पैनल. और इसके अलावा ना सोलार के लिए मतलब पहले अगर उन्होंने कुछ लोन वगैरह लेकर रखे हैं, सब्सिडीज लेकर रखे हैं सोलार के लिए, तो फिर यहाँ पे फिर आपका अप्लाई नहीं होगा. एंड दिस वन इज अ न्यू प्रोजेक्ट और द न्यू स्कीम. यहाँ पे जो हाउस होल्ड है ना, लेट्स से दोज पीपल्स हैविंग द रूफ टॉप, they have not what I felt any kind of solar project related schemes and the subsidies they will avail. So that means who's the criteria is that Indian citizens must have a owned house. उनके पास खुद का एक घर होना चाहिए, उसके पास रूफ भी होना चाहिए, और खुद का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए. अगर नहीं है तो फिर आप करवा लीजिए लीगली. और जो हाउस होल्ड होगा ना, मस्ट नॉट अवेल्ड एनी काइंड ऑफ अदर सब्सिडीज फॉर द सोलर पैनल. पहले से अगर उसने कुछ लिया नहीं तो अच्छा है, तो मिल जाएगा. देन हाउ टू अप्लाई, फिर आपको कैसे करना होगा, ये यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे जाके आप कर सकते हो. ये डेटा जो मैंने लिया है, ये जो सोर्सेस पीआईपी, ये कहाँ से लिया है मैंने? पीआईपी. ओके, तो हाउ कैन ये कंज्यूमर अवेल द लोन फैसिलिटी, आपको लोन कहाँ से मिलेगा? देखो यहाँ पे लोन चाहे कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको खुद को एनरोल करना पड़ेगा. जो भी डेटा वगैरह जो भी क्वारीज होगा वहाँ पे आप पुट कर देना. उसके बाद जो हाउस होल्ड वुड बी एबल टू access द कोलेट्रल फ्री लो इंटरेस्ट loan. This is very important because UPSC is now asking this kind of stuff in the option. So this one is what, once again I repeat, collateral free low interest loan product, around 7% at present
for the installation of the residential RTA system up to 3 kilowatt, and interest rate has been picked 0.5% above the prevailing repo rate decided by the RBI from time to time. मतलब क्या है, जो आपका जो लो इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट का होगा अराउंड 7% एट प्रेजेंट इंस्टॉलेशन ऑफ द रेजिडेंटल सिस्टम, जो इंटरेस्ट होगा ना उसको 0.5% पे किया गया, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो भी आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट है जो आरबीआई डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से बैंक किया जाता है, रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट वुड बी पे, मतलब वहाँ पे फिक्स्ड किया जाएगा एव ऑफ द प्रिवेलिंग रेपो रेट, जितना भी रेपो रेट होगा उससे बस 0.5% ज़्यादा होगा और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे एक आरबीआई का हिसाब से गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। इवन अगर हम देखेंगे इन द इवेंट ऑफ रेपो रेट, अगर हम देखेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल 6.5% हो गया प्रेजेंट एंड गेटिंग रिड्यूस्ड टू से 5.5%, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर द कंज्यूमर विल बी 6% इंस्टेड ऑफ 7%। अगर यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अगर आप सोच लो कि द रेपो रेट 6.5% है और कम हो गया 5.5 हो गया, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा कंज्यूमर के लिए 6% इंस्टेड ऑफ 7%, क्योंकि जो बाकी अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर हो ना तो वहाँ पे आपको 7% देना पड़ेगा। बट इफ यू आर सिंपल, you are getting loan for this one, for this project, for the rooftop solar project, you would only 0.5% ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.5%, तो अगर 5.5 के 0.5 हो गया ना 6%, so you will give what 6%। That means the interest rate you have to remember this one कि जितना भी आपका रेपो रेट होगा उससे 0.5% ज़्यादा लगेगा, कोलेट्रल फ्री, बस दोनों को याद कर लेना, अप टू 3 किलोवाट, उससे ज़्यादा नहीं। ना हाउ शुड वाई शुड ए, एक मिनट देख लेते हैं। यस, नाउ वाई शुड ए हाउस होल्ड ऑप्ट फॉर द रूफटॉप सोलर प्लांट। नाउ ये जो स्कीम है ना इसको क्यों लेंगे, क्या जरूरत है, मतलब जो अगर हम बोलेंगे कि जो टारगेट है ना 1 करोड़ हाउस होल्ड का जो टारगेट है कि हाँ हमारा मतलब भारत में कि जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है इसका हमने ये डिसाइड करके रखे हैं कि कम से कम 1 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है, लेट इट बी द अर्बन, इसमें स्कीम में ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं है कि रूरल अर्बन 1 करोड़ हम करेंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, देखो बेनिफिट तो ये है, पहले जो आपका 300 यूनिट्स है ना मंथली वो आपका फ्री पे मिल जाएगा। तो अगर आप सोचो कि किसी ने 3 किलोवाट का एक कैपेसिटी का सोलर इंस्टॉलेशन करके रखे हैं, ठीक है, आपको तो 300 यूनिट्स तो ऐसे ही फ्री पे मिल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो आप ग्रिड पे बेच देना उसको, ठीक है। तो हाउस होल्ड विल बी एबल टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो डिस्कम वगैरह जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कंपनीज है वो तो चार्जेस बहुत लगाता है, तो उसके हिसाब से हमारा खुद का जो प्रोडक्शन होगा वो तो कम होगा। सो ऑलमोस्ट महीने में ना कम से कम ईयरली, अगर हम ईयरली देखें 15,000 का कमाई हो जाएगा कम से कम, है ना, ठीक है। तो ये टारगेट है कि सिंपल इकोनॉमिक्स अगर हम देखेंगे द हाउस होल्ड वुड बी एबल टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी बिल एज वेल एज द एडिशनल इनकम थ्रू द surplus sales to the discoms. So nearest discom, those who are selling to your area, they will the extra solar energy that would be produced by you. Somebody, let's say, I would say 3 kilowatt. Let's say somebody is producing 3 kilowatt, 1 kilowatt he is consuming per day, and the 2 kilowatt will be sold out to the grid. That will earn money to the household. Such household, by generating its own electricity, will save the electricity bills up to 1,800 to 18, that is 1875 even, reducing the EMI कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा लोन का, ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी इसमें अगर हम देखेंगे एक, so that will need to but further enhance of the renewable energy. So as we are having target 2030, we are having 2030 target, we are having 2070 target,
We are having 2047 target. So these targets will be achieved through this. So by doing this solar rooftop mission, first of all, we will able to produce more renewable energy, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे और क्या होगा, वी विल हैव द ग्रीनर प्लानट. यहाँ पे क्या होगा, सो ग्रीनर प्लानट होगा, क्योंकि जो मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये जी उसका प्रोडक्शन हम कम कर पाएंगे, हमारा जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो हमारा जो एनडीसी है, जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो भी अचीव हो जाएगा बाय 2030. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 है वो भी अचीव हो जाएगा. By say of, you can link it into the different topics you are having. Okay, so that would be, and also you can write for the conservation of energy, for the conservation of energy, because world has lost so much of what I would say in the green space in the last 10,000 years. In the last 10,000 years of the human civilizations, we have lost almost 40% of the total green space and the covers of the earth. So we need to regain that once, because this is the need of the hour. So we hope that this kind of initiatives, the schemes and the government policies that will enhance to achieve the sustainable development goals of India, and to make our planet to be more greener, healthier and more sustainable as well. So thank you very much. Share it, like it as much as possible. Also, you can also put forward your suggestion how to improve the session as well. With this, I end the session. Thank you, everyone.